Ladies and gentlemen, tonight's celebration is not merely a commemoration of our hard-earned independence. It is a homage to Mark-I-Haq, a historic campaign that epitomizes the courage, sacrifice and steadfastness of our armed forces. Under the astute command of Chief of Army Staff, Field Marshal Syed Asim Munir, Nishane-e-Imtiaz military, Pakistan Armed Forces delivered a decisive and coordinated response to Indian aggression, demonstrating operational excellence across all domains. His visionary command ensured that our armed forces acted in unison to deliver a crippling blow to the adversary. Pakistan Army inflicted heavy damage to the enemy through destructive, precise and strategic targeting, employing long-range vectors and unprecedented firepower. Whereas Pakistan Navy deterred aggression by keeping Indian Navy at bay, ensuring the sanctity of national territorial waters. Upholding the proud legacy of being second to none and guided by its bold leadership, Pakistan Air Force wrote a new chapter of aerial warfare, one that will be remembered as a textbook case in military aviation history. Pakistan Air Force delivered a decisive blow to Indian Air Force by downing 6 of its frontline fighters, 3 Rafale jets, 1 Su-30, 1 MiG-29, 1 Mirage 2000, alongside a Heron UAV. The offensive campaign of Pakistan Armed Forces surged from north to south, in which high-value military targets, including India's prized S-400 air defense systems, were obliterated. It was not just a military operation, it was a statement. Ladies and gentlemen, on the venue, as the fighter jets running towards the venue, their thunderous approach echoes unwavering resolve. Their speed speaks of fearsome power, and their gleaming lights blaze with the promise of hope and a radiant tomorrow. Watch as flares ignite. Each flare that streaks is more than light. It is a pledge, a fiery oath to defend, to deter, and to reign supreme in the defense of our homeland. ख्वाब था इकबाल का, ताबीर पाकिस्तान है। ख्वाब था इकबाल का, ताबीर पाकिस्तान है। मेहनत अजदाद की तस्वीर पाकिस्तान है। चोटकारी थी अदू पर ये अलहदा सल्तनत, चोटकारी थी अदू पर ये अलहदा सल्तनत, जो गिरी दुश्मन पे वो शमशीर पाकिस्तान है। खैबर और पंजाब से सिंध बलोचिस्तान और कश्मीर तक, खैबर और पंजाब से सिंध बलोचिस्तान और कश्मीर तक एक रखती है जो वो जंजीर पाकिस्तान है। कौन कहता है
कि खाली हाथ हैं मेरे यहाँ? कौन कहता है कि खाली हाथ है मेरे यहाँ? मैं रईसों में हूँ कि जागीर पाकिस्तान है। नाम सुन के ही मुझे मिल जाती है फौरन शिफा। नाम सुन के ही मुझे मिल जाती है फौरन शिफा। वास्ते अपने तो एक अक्सीर पाकिस्तान है। Ladies and gentlemen, the skies have come alive to present a salute to the nation. This is not just a sight to behold, but a story of valor in the skies. This is legacy in motion. This is Pakistan Air Force. ख़वातीन और हज़रात, इसके साथ ही पाक फ़िज़ाइया की सलामी अपने इख्तिताम को पहुंची। ख़वातीन और हज़रात, परेड कौमी नारा लगाएगी। आपसे गुजारिश है कि कौमी नारे में परेड के साथ शामिल हों। जी हाँ, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। यही आज की इस तकरीब की थीम भी है और हमारा अज़्म भी। ख़वातीन और हज़रात, ट्राई सर्विसेज बैंड का दस्ता इस्तक़लाल की खूबसूरत धुन पर मार्च करते हुए परेड वेन्यू में दाखिल हो चुका है। इस बैंड ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी अपनी महारत का लोहा मनवाया है। Ladies and gentlemen, GHQ military band was raised on 14th August 1993. 19 different instruments are being played in the band which is participating in today's parade.